एक साथ ने कहा वर्षों से गन कल्चर थे, इन्होंने गन कल्चर की बात की, ठीक है, उन्होंने अपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये गन कल्चर किसने कंट्रोल करना था? ये रियासत की जिम्मेदारी किसके पास थी? हम छीटाकशी ना करें, लेकिन जैसे आज हम बात करते हैं तो आज गन कल्चर नहीं है। आज अगर यूटी है तो गन कल्चर नहीं है, जब रियासत थी तो गन कल्चर था। तो इसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि यूटी चाहिए या रियासत चाहिए। रियासत में गन कल्चर है और यूटी में पूरा मन है। इसी तरीके से मेरे बेग साहब ने कहा कि हमारे पास, मैंने फिर से दोहराना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि रियासत की सरकार के पास सोर्स ऑफ इनकम के लिए सिर्फ टैक्स लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स। तो मैं ये बहाना लगा के हम कहेंगे कि जनाब प्रॉपर्टी टैक्स के बगैर सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, इसलिए हम लोगों का कुछ नहीं कर सकते। तो ये भली भांति हम लोग पहले से जानते थे। मैं सर कंक्लूड करने से पहले 3-4 पॉइंट जो है यहाँ पे जिनके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा सर। इसमें जैसे मेरे साथियों ने यहाँ चर्चा करी है कि 370 का, हालांकि यहाँ असेंबली का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि उसको हम यहाँ पे डिस्कस करें, लेकिन मैं सर बात करना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता। हमने कहा कि ये क्यों हमारे हाथ से कैसे निकला, ये आर्टिकल 370 ये कौन जिम्मेदार है इसको यहाँ से रिमूव करने का? मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर हम दुहाई देते हैं जनाब, हम तो सारे भाईचारा की बात करते हैं, भाईचारे पे विश्वास करते हैं। कितनी बार हम लोगों ने यहाँ पे बिल लाया यहाँ असेंबली के अंदर कि जनाब जम्मू कश्मीर के संविधान में एक सेकुलर वर्ड तो ऐड कर लो, कैटेगरिकली रिफ्यूज किया गया, नजरअंदाज किया गया। सेकुलर वर्ड लिखने से क्या फर्क पड़ जाता? इतनी हम लोगों में इतनी मतलब इतना कम से कम इस कानून की रक्षा करने वाले जो लोग हैं, हम इसमें 70 वर्षों में सेकुलर वर्ड नहीं यूज कर पाए। ये मैं वजूहत गिनाना चाहता हूँ। सर मुझे बताइए, और जम्मू कश्मीर एक ऐसी असेंबली थी जो 6 वर्ष उनका कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन मुझे बताइए अपनी पावर का मिसयूज हमने कैसे किया? मुख्यमंत्री का ऑफिस 6 साल का होगा, मंत्री का ऑफिस 6 साल का होगा, MLA का ऑफिस 6 साल का होगा, उस पंच का ऑफिस 5 साल का रहेगा। इस रियासत के अंदर उस सरपंच का ऑफिस 5 साल का रहेगा, उस हमारे काउंसिलर का जो ऑफिस है वो 5 साल का रहेगा। ये पावर हमने मिसयूज की है, जिसका रिजल्ट हमें मिला है। आज हमारी बेटियों की शादी, उमर साहब शादी करते हैं बाहर तो कानून बराबर है, लेकिन उमर साहब या बलवंत सिंह की बहन शादी बाहर कर देती तो उसका अपने मायके की प्रॉपर्टी से सारा अधिकार खत्म हो गया। ये किस तरीके का कानून? मैं खत्म करने जा रहा हूँ, ये वजूहत है। आज मुझे सर बताइए लास्ट में, पीओ के 70 वर्षों से 75 वर्षों से उस साइड से लोग यहाँ पे आ गए, उनको हमने यहाँ पे नागरिकता का अधिकार नहीं दिया, 35 से लगा दिया, नागरिकता का अधिकार नहीं दिया। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे, अमेरिका में चले जाएं, 4 साल किसी तरीके से अगर आप वहां रह जाएंगे तो आप उसके नागरिक बन जाएंगे। और यहाँ पे 70 साल तक आप इस रियासत के नागरिक नहीं बने, हिंदुस्तान के नागरिक बन गए, जम्मू के नागरिक। ये जो हमारा माइंडसेट है, क्या केंद्र में बैठी सरकारें इसको नहीं समझ रही है, जो वजह रही हमारी? मैं ये कहना चाहूंगा सर, आज लोग यहाँ बात करते हैं, या इस असेंबली के अंदर नारा लगता है हमारे पड़ोसी मुल्क का, नारा लगता है जिसकी वजह से आज 370 किया है। सर लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ आज जो पाकिस्तान की बात चलती है कि उससे बात करेंगे पुरअमन के लिए, सर आज हिंदुस्तान इतना मजबूत है। एक वक्त हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे तो वहां इंतजार करना पड़ता था प्रेसिडेंट अमेरिका को मिलने का। आज मोदी जी जब बाहर हैं तो टाइम लेना पड़ता है, हिंदुस्तान इतना सफिशिएंट नहीं है कि ऐसे भूखे नंगे पड़ोसी मुल्क से हमें सलाह लेने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत नहीं है कि वो सलाह देंगे जम्मू कश्मीर में पूरा मन कैसे हो सकता है। इसलिए स्पीकर सर, हम सेल्फ डिपेंडेंट है, आज का भारत सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। हमें किसी पड़ोसी और दुश्मन मुल्क की सपोर्ट नहीं चाहिए कि जम्मू कश्मीर में पूरा मन होगा। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सर, आपने मुझे अपना कीमती समय। चलो आपका मेहरबानी करके तशरीफ रखिए, आप बात मत करें। अब बात हो गई, अब अपनी बारी पर बोले, अपनी बारी पर बोले। इसमें कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं कहता कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तशरीफ रखिए।
तारीख है खरा साहब। Thank you, Speaker, sir. Honorable Chief Minister had started his budget speech with a Persian verse, and in consonance with the spirit of that verse, I would also like to narrate one. गुजरा है चमन कैसे मराहिल से जरा देख, गुजरा है चमन कैसे मराहिल से जरा देख, हर सिमत नमाया है खरोचों के निशाना। Honorable Speaker, sir, while rising up to speak on the proposed budgetary provisions for the year 25-26, firstly, with full sense of responsibility, I digress to call this House as an extraordinary House, working in extraordinary situations. This isn't a normal House as it used to be before abrogation of our constitutional guarantees on 5th of August 2019. Today, this is a citadel of aspirations of more than 1 crore citizens of J&K in extraordinary situations. It stands as a historic institution marking the restoration of democracy after a prolonged struggle, a triumph we owe to the gracious wisdom of Honorable Supreme Court. We, the members of this House, carry a profound responsibility on our shoulders, a responsibility bestowed upon us by this historic mandate after 3.5 decades of turmoil. This mandate is even more special, keeping in view the first-time voters, the voters who have been voting since decades, and a section of voters who stayed away from this electoral process for decades, but are participating in it for the very first time. Isn't it then this our bounded duty to respect this mandate of the people? I fear if this House does not live up to the expectations of the people in general, and the youth in particular, a sense of cynicism and despondency might creep in these people, thereby undermining their faith in democracy and democratic institutions. This August House holds even more importance as it doesn't just resonate with the local aspirations, rather it remains under a close watch even globally. So, we the representatives of this House need to ask ourselves whether we have the time to debate or propagandize our historical and trivial issues or move forward. If we have to move forward, then we should unite in our endeavor to pull out Jammu and Kashmir out of the quagmire of unrest and instability, transcending party affiliations and ideological differences. What binds us together is our shared identity as citizens of Jammu and Kashmir, and all of us should resolve to play a historical role to take out Jammu and Kashmir out of despair and despondency for the public good. We are entrusted with greater duties and responsibilities as elected representatives. In respect of this historic mandate, with one resolute voice, we must thus champion the restoration of statehood, rising above political divides. Statehood is not the privilege of any single political entity. It is the right of every citizen of Jammu and Kashmir. It is a promise made to us on the floor of Parliament, a pledge we hold sacred. Even more than this promise, it is the respect and dignity of the citizens of Jammu and Kashmir. Now, coming back from my minor digression, this budget is not just a document, it's lifeline, a bold step forward after 7 years under an undemocratic setup. And I am here to stand for it, dissect it, and carry it forward. It is about what works for our people, and this budget with its grit and vision delivers. 3 pillars hold it up: economic growth, social welfare, sustainability, and let me tell this House why. The J&K GSDP has grown from rupees 1.64 lakh crore from financial year 2021 to 2.45 lakh crore in financial year 24-25.
This is an impressive increase in the economy, keeping in mind that financial year 21-22 was severely affected by COVID. 62% of gross state value added of our economy comes from the tertiary sector, the services sector. It is important to build up a long-term strategy based on the existing structure of the UT's economy. The budget speech mentions many challenges, one of them being the geographical challenge. It can also be an opportunity. The geography provides abundance of nature which can be catalyst for economic prosperity. The budget estimates to grow the contribution of tourism to 15% in next 4 to 5 years from the existing 7%. The government should benchmark global tourism leaders like Switzerland and Thailand to adopt best practices and become a global tourism powerhouse. The budget has pegged the fiscal deficit for financial year 25-26 at a very impressive 3%, down from 5.5% for financial year 24-25. Revised estimates. The state GDP growth is projected at 9.5% for the financial year 25-26. The government should leverage the tools like GSTN from Indian digital public infrastructure and the expected developments in AI to zealously strive for attaining these goals. India has set global benchmarks in DPI, and we should build up on this infrastructure and train its administration to be trendsetter in the use of artificial intelligence to plug in any gaps and privileges. At the same time, we should focus on vocational training in sectors like horticulture, agriculture, aquaculture, handicrafts for employment generation and economic growth. India has become one of the biggest markets for exporters of walnuts, apples, and other fruits and nuts for producers in California, Chile, Iran, Afghanistan, etc. J&K should study the competition in these sectors and adopt global best practices. We have to focus on increasing revenue and reducing non-priority spending. We should do so using technology and minimizing human interface, resulting in avoidable harassment of businesses, yet resulting in plugging the leakage and improving the ease of doing business. Honorable Speaker, sir, I know the constraints financial autonomy is clipped. Resources are tight. Pain is real for every citizen. We all feel it takes it for future roads linking markets, hospitals, saving lives, jobs lifting youth, and this is what we